friends, welcome to our channel. Today we will start our operations on algebraic expression. We have started this topic in lecture number second, okay? And in lecture number second about operations on algebraic expressions, we have read about additions, okay? And now we will study about subtraction. In this subtraction, first we will study about simple expressions. Simple expressions mean monomials. Okay, like 7x minus 7x minus 5x. We have write first in the columns. Okay, and 7 minus 5. 7 minus 5. We get 2. We get 2. 2x is the 2x is the answer. Okay, and now next 2x is the answer. This is the rough work, so don't do it in examination. 23y minus 15y. 23 minus 15 we get 23 minus 15 we get 18y. 18y. Y is the common, we write y, yes. And 23 minus 15 we get 18. 23 minus 15 we get 18. Okay. 23 minus 15 we get 18, not so sorry, 8. Yes. 17t minus 9t. 9 is the t is the common, we have t, yes. And 17 minus 9 equals 8. Equals 8t. Okay. And now we will study about एग्जाम्पल नंबर 4. देखना, ये जो 4th एंड जो 5th है इसके अंदर क्या होता है, साइंस चेंज होते हैं. देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या रहता है, 4 देता है. सब्ट्रैक्ट minus 7abc from 2abc. Okay, from 2abc and minus 7abc. ओके, अब क्या करना है, देखना ये किसका साइन है, जैसे कि देखो लास्ट ये इसके अंदर. ओके, सेकंड लास्ट मींस ये वाला नंबर. तो ये वाला नंबर अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है इन सब्ट्रैक्शन केस ओनली, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ द एक्सप्रेशन इज, if the term is in positive then we make in negative. ओके, जैसे इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस. तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है. तो क्या देगा हमें, प्लस हो जाएगा. इसकी जगह क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, यस और नॉट. ये भी प्लस है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 एंड वी गेट 7 and 2 9abc. Okay, this is the answer. And next take away minus 4a from 5a. Minus 4a from 5a. 5a, yes, and minus 4a. Minus, yes or not, yes. Minus minus plus, yes, we get plus. Okay, and 5 and 4 9 and a we get 9a is the answer. And now we will move forward on to compound expressions, subtraction of compound expressions. And now we will study about subtractions on compound expressions. Subtractions on compound expressions. Okay. Example number first. We have to write first in the column from subtract bracket 2x plus 3y bracket from bracket 3x plus 7y. 3x plus 7y. Yes. And next 2x
प्लस 3y। ओके, अब देखना ये नंबर क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, माइनस का है। ओके, अब देखना ये क्या है, प्लस माइनस, मैं इसको साइन को उठा रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यस नॉट, यस। ओके, अब देखना ये भी क्या है, प्लस का, ये क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो वी गेट माइनस। ओके, ऐसे करते हैं, साइन चेंजेस होते हैं किसमें, साइन साइन में। ओके, अब यहाँ प्लस माइनस वी गेट माइनस, बट द value of plus, but the value of positive is more than value of negative, then the answer is in positive. Okay, and but we have to do subtract, but we have to do subtract. Okay, and we get 4y. Okay, we have solved this column and we move on next column. Okay, this is negative number and this is positive number, so we get plus minus minus, plus minus minus, we get 1x. Okay, 3 minus 2 equals x, 3x minus 2x equals 1x, या फिर 1x equals x. ओके, अब देखना, अब जो नंबर, जो आंसर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। जैसे कि देखना ये 3x किसका है, पॉजिटिव का है, और ये -2x किसका है, नेगेटिव का है। ओके, तो पॉजिटिव 3x इज द ग्रेटर देन नेगेटिव 2x, so the answer is in positive. Okay, yes or no, अब मैं इसको लिखे या नहीं लिखे, it is true. Okay, and now next subtract bracket 5a minus 3b from 2a plus b minus 2. ये इसके अंदर क्या है, सिंप्लीफाई है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन भी आ रहा है ना। ओके, नाउ 2a plus b minus 2 मीन्स टर्म के नीचे क्या आना चाहिए, टर्म आना चाहिए, जैसे कि 5a माइनस का माइनस 3b प्लस, अब क्वेश्चन तो खाली छोड़। ओके, माइनस करना है, किसका, प्लस का है, क्या करना है आपको, माइनस करना है। ओके, प्लस माइनस माइनस, so we get here minus. Okay, and there minus minus plus. Okay, and now -2 का -2 here, and plus b plus 3b, b plus b 1b, and 1b plus 3b equals 4b, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, किस चिन्ह आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस की जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 3a. दिस इज द आंसर. And next we will move on multiplication of algebraic expressions. मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले अपन ये कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. ओके, एंड नाउ फर्स्ट वी विल टेक 5x 2x minus 3. ओके, देन ये इसमें क्या है, पॉजिटिव है, यस और नो, यस. अब आप इसको माइनस, अगर फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट. ओके, फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट, we remove the bracket, we get plus 2x minus 3. Yes or no, yes. And we use the BODMAS rule, yes or no, yes. We solve first the addition, first addition, we get 5 and 2 7x minus 3 minus 3. And next we move, दिस इज दी आंसर. अब देखना इससे आगे अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, ना ही इसके पास तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये क्या है, 7x minus 3, 7x minus 3. इसलिए तो अपनों को किसको खोलना पड़ा, ब्रैकेट को खोलना पड़ा. अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता तो क्या होता, 2x minus 3x equals minus 1x and plus 5. yes or no, yes. Plus 5x plus minus 1x plus minus 5x minus 1x equals
4x. This is the answer. If there is 3x, but there is only 3, okay, then we get the answer 7x minus 3. Okay, this is the solution of answer number question number first. Okay, and question number second, minus 2x square minus break it minus x square plus 4x. Okay, and now minus 2x square, there is a minus before the bracket. Okay, minus and minus, this doing the minus doing the this bracket multiply, yes or no? We do माइनस से अपन इन दोनों साइंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस, so we get minus minus plus x square, and now minus into plus equals plus minus minus into 4x. देर इसमें क्या हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हो गई. ओके, एंड नाउ वी सॉल्व इट. This is the plus, this is the positive number, and this is the negative term. This is the term. Okay, this is the negative term. Okay, we solve it. Plus minus minus. Okay, we get minus. Plus minus minus, we get answer x. We get answer x square. Okay, yes or not? Yes. Minus x square, and we take minus minus 4x minus minus 4x. This is the answer. Okay, अब इसको अपन आगे क्यों नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये क्या है, पावर है. इसके अंदर पावर, इसके अंदर पावर है, लेकिन अपन यहाँ तक सोल्व हो गई आंसर. ओके, एंड नाउ वी विल मूव. ओ आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ तक क्लास 7 के लिए सफिशिएंट है. ओके, एंड नाउ and next we will study about multiplications on algebraic expressions. And now we will discuss about multiplication. In multiplication, first we will study about multiplying a monomial by a monomial. Okay, and in this first we will study about multiplying two monomials. Okay, for example, x into 3y, x into 3y, x into 3 into y. What we get? 3 into x into y equals 3xy. Yes or no? Yes, this is so easy. Okay, 5 into x into minus 3 into y. What we get? 5 into minus 3 into x into y. What we get? 5 3s are 15. Minus 15 into x into y equals 15 minus 15xy. Minus 15xy. And now we will move forward multiplying 2 or 3 monomials. And now we will studying about, this is the second of this, multiplying 3 or more monomials, like 2 into 5 in 2x into 5y into 7z. Okay, these three are variables. There is no common, so we write x, y, z, and 2 into 5 into 7. Yes, we get 2 for z 10, and 10 into 7 70 x, y, z is the answer. Okay, this is the solars. And in short, what we'll do, there is a power 1 in both
yes or no? 4x to the power 1 y to the power 1 into 5x square into y square into 6x cube y cube. Okay, we get, look, x1 y1, okay, into x square into y square into x cube y cube. Okay, and what we do now, there is a powers, and what is the degree, of the x and y, the x और y की डिग्री क्या होगी, जैसे कि देखिए x टू दी पावर 3, यहाँ पे डिग्री कितनी है x की 3 और यहाँ पे कितनी है डिग्री 2 और यहाँ पे कितनी है 1, तो सबको क्या करना है, ऐड करना है, हाउ मच, 6, x टू दी पावर 6, वी गेट x टू दी पावर 6, x की डिग्री कितनी आ गई, 6 आ गई, ओके, एंड y की डिग्री कितनी आ गई, y की डिग्री कितनी, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, वी गेट 6, तो सो x to the power 6 and y to the power 6, we get last, okay, and what we get now, 4 into 5 into 6, x cube x, sorry, x to the power 6 and y to the power 6, and what we get, 5 6 are 30, 5 6 are 30, and 34 is 120, x to the power 6 and y to the power 6. Okay, this is the answer. And now we will move forward. And now जो बचे हुए जो टॉपिक्स है अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन द डिवीजन, देन द डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं. Okay, these topics, the remaining topics we will discussed in our lecture number 4th of algebraic expressions. Okay, and this is the ending of the video. Please like, share and comment on the video and subscribe to our channel also. Thank you. Have a nice day.